everything was transparent and equal. PMC decides, society follows. So as I said, we have not appointed or we did not appoint a PMC till the time we floated the tender. So क्यों नहीं किया? Because we were capable enough to do our own research. RTI कर दिया, the government से documentation collect किया, we got the feasibility report done, surveys done. Tendering, we have already created our tender, mostly the digital one. We'll see an example. So that's why we did not need or did not find a need to have a PMC at that stage. We appointed a PMC only after our tender was out, just to make sure that they do a double validation of the data we are going to get from the bidders. That was the only reason we hired, I would say, not even a PMC, more of a redevelopment coach who is going to act as a coach and help us to understand or help us to evaluate some of the parameters when the offers are coming in and fine tune that. People say good developers will not participate. We had a lot of objections from our society members and some of them were our MC members also, that they will not participate, etc. We did a lot of other things to make sure that developers are interested. So we launched an aggressive marketing campaign. We created a good video. We'll show you the video. We formed a marketing team who reached out to individual developers and convinced them to be part of the bid. Resulting, we got good developers within the 31 developers. So 31 developers purchased the tenders and some of them were very good developers. Excellent response. We trained developer staff. So since this is a e-tender, something different than the market, we spent a lot of time with the developers staff and the developers themselves and educated them how to use this Excel spreadsheet or the algorithm based tender. What is the advantage? How will they feel better using this compared to the traditional method? Because right now also they are in the traditional mindset. Okay, percentage दे दिया, corpus दे दिया, दो तीन चीज दे दिया, offer खत्म हो गया. But that is not what the entire offer is. There is much more in that. And resulting in our education, 55% of the developers filled in the tender and submitted the bids on time. Yes. So, what is the plan of doing all these process instead of appointing a PMC? You could have done straight away, putting in a file, and you could have selected in the developers. ये सब process करने की क्या जरूरत थी मुझे? See, ये process इसके लिए करना पड़ा because generally ये होता है कि जो PMC करता है, society उसको follow करती है. We don't want to follow that process because we want to make sure that ultimately PMC जो लेके आता है developers को या ad के through जो आते हैं, तो SGM ही appoint करेगी ना? Correct, but we want to even remove that biasness. Okay, see the trend is that PMC अगर है तो PMC अपने developer को लाता है, whatever that criteria is. We want to get away with that. Plus, there's a cost which PMC is going to charge. Nothing is free in life, right? आप या तो पे करो या तो आप बोलोगे डेवलपर पे करेगा, but ultimately it is your money who the developer is going to pay. आपके प्रोजेक्ट में से ही वो पैसा जा रहा है, करेक्ट? तो अगर वो पैसा बचता है तो किसका बचता है? मेंबर्स का बचता है indirectly. So and plus when we are in the game, we know each and everything about all the developers. Here, if you are going to rely on PMC, you will know only what they are going to tell you. You will not know what they are not going to tell you. You know what you know. You don't know what you don't know. So when we are doing the research, now at least for the MC members, we know each and every developer उसका finances क्या है, what is the offer, what are the pluses, what are the minuses. Which normally in case of PMC you are relaxing, you will not know all that. You will just follow whatever PMC is going to tell you, and you will not use your mind and your brain to churn that data. Correct? That is the reason we want to make sure that we eliminate all those things and the speed. When you appoint a PMC, he is going to go with his own speed. He will tell you, मेरे को ये चीज के लिए 6 महीना लगेगा, ये चीज के लिए 1 साल लगेगा. Public क्या बोलता है? टेंडर निकाला मतलब तुम्हारा 1-1.5 साल तक डेवलपर होना नहीं है सीधे. Based on the overall timelines. I have a timeline when we were doing the PMC stuff. We have the timelines from there. We show that I'll be able to select my developer only after 1.5 years or 2 years, or maybe it is 1.5 years. Here I'm able to do it in 6 months time. So I am having the advantage of 1.5 year jump straight away by eliminating a lot of things because PMC is doing multiple projects. He will not have time only for one project. 79 it doesn't say that you have to compulsory appoint to PMC. Yes. 79 cluster development. It says you have to appoint it PMC. No, it says you should appoint for the guidelines and to help. And we have a development coach who's going to follow the process also. Sir, what I suggest is that you please complete the presentation and you take the question. Okay. So let's do that. If you can park your questions. Speed leads to making mistakes. So this was one of the myths which our members are fearing. So what we did is, as I explained, Gantt chart was there, quarterly schedule was given to them.
We should reiterate the timelines. Every month we should tell them. All our meetings are published very in advance. So members are aware that this is what is happening. In case if there is any recalibration needed, अगर कुछ ज़्यादा changes हो रहा है, we should recalibrate. ऐसा नहीं है कि एक बार भेज दिया वो final होता है. It is a process. Some things may take time, so we should recalibrate as needed. This is the marketing video which I was talking about. So I'll hand it over to Kalpesh, who's going to take it ahead from here. Thank you, Raymond. So, good evening, everyone. Myself, Practioner, and I am also the treasurer of Hariom, whose case study is being looked upon right now. So, not waste time and go forward with it. So, we'll just play the Are you video. undertaking redevelopment projects? Grab the opportunity to redevelop a mega redevelopment project. Hariom Apartments, SV Road behind Vijay Sales, Borivali West, Mumbai 400092. Redevelopment tender releases from 19th January 2023. Highlights of Hariom Apartments. Attractive plots available for construction. Number of units 216, including 2 units used as hospital, 13 as shops. Hariom Apartments located 500 meters from Borivali Station. 500 meters from Borivali East-West Flyover and 1.6 kilometers from Western Express Highway. An alien view of Hariom Apartments. Location advantages. Roads at 3 sides of the plot touching SV Road, 1.3 kilometers away from Boisar Gymkhana, in the heart of the location preferred by major communities, less than 550 meters away from Boisar Lake Road. Less than 300 meters away from Jain Derasar, 16 minutes away from Swaminarayan Haveli, 15 minutes away from Apimata Mandir, opposite Molji Nagar, less than 500 meters away from Jain Upashray at Molji Nagar. Blocks including private road access stretching from SV Road, an ideal location for shopping, commercial center. A huge price appreciation possibility. Other highlights. Written irrevocable consents received by 81% members in support. No involvement of any PMC in the tendering process. A simple standardized tender format setup. Evaluation of tenders will be advised by independent experts. All decisions to be taken by the general body only. Top 3 developers will be provided with all documents who will directly make presentations to members. Hariom comprises of professionals who are the elected managing committee. Hariom Apartments redevelopment project. Grab the opportunity. To get more details, please contact 7977742198. Thank you. So ये एक नया तरीका हमने ट्राई किया था रिडेवलपमेंट को लेके, क्योंकि हमको बहुत डराया गया था कि आपने जो टेंडरिंग किया है वो फ्लॉप हो जाएगा, कोई बड़ा डेवलपर एक प्लस डेवलपर जिसको बोला जाता है कोई आएगा नहीं ये सब चीज में। सो कमिटी ने सोचा कि जैसे बाकी सब चीज़ों को मार्केटिंग किया जाता है तो हमारा भी ये चीज़ को क्यों मार्केटिंग किया नहीं जाए, क्योंकि इतना बड़े स्केल पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसका भी एक मार्केटिंग वीडियो क्यों ना बनाया जाए। तो कमिटी मेंबर्स और मेंबर्स दोनों ने मिलके ये वीडियो बनाया गया है, थोड़े एक्सपर्ट्स का हेल्प लिया है, पर जहाँ हो सका हमने खुद का ही, क्योंकि वी हैड अ सोल इन इट, मेंबर्स को भी सबको इन्वॉल्व किया गया है ये सब चीज़ों में कि आप भी आओ, हेल्प करो और आपका इनपुट डालो। तो जो पॉइंट्स थे कि ये इतना नजदीक है, ये स्टेशन से नजदीक है या मंदिर है, वो मेंबर्स से इनपुट लिया गया और उसको वीडियो में इनकलकेट किया गया, कि जिसके कारण हम सबको एक फैमिलियर फील हो गया और मेंबर्स को भी इन्वॉल्वमेंट फील हो गया कि चलो भाई
भी ये वीडियो के पार्ट है। और द मोमेंट द वीडियो गॉट लॉन्च्ड we did not expect so much of response, इतना रिस्पॉन्स आ गया क्योंकि इतने फॉरवर्ड्स होने लगे, सब ग्रुप्स में लगने लगे, हमको कॉल आने चालू हो गए कि भाई तुम्हारा मीटिंग है, ये वीडियो आया उसमें तब चलो। तो वो वहां से पता चलता है कि भाई आपका जो वीडियो का सक्सेस है वो काफी बेटर था। तो अनएक्सपेक्टेडली जहाँ पे सोचा नहीं था वहां पे हम लोग का 31 टेंडर्स बहुत सोल्ड हुए। जहाँ पे लगता था कि 5 से 6 नहीं आएंगे, वहाँ पे 31 वेंडर्स, वहाँ पे A+ जो बिल्डर्स है उन्होंने भी बाय किया और वो भी ओपन टेंडरिंग में, जो सोचा नहीं था। सो दिस वीडियो डेफिनेटली हेल्प्ड अस टू मच और वो बेसिस पे हमने फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया और यहाँ से दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पे हम लोग का टेंडरिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जैसे कि वीडियो में बताया गया कि हमने पीएमसी और उसको इन्वॉल्व नहीं किया, वन ऑफ द रीजंस द बिल्डर्स केम वाज कि हम लोग ने वो नोटिस भी डाला था कि पीएमसी ने डायरेक्ट एमसी से आपको इंटरेक्ट करना है, तो वो भी एक हेल्पफुल था क्योंकि काफी डेवलपर्स ने ऐसे बोला कि भाई ये अच्छा है कि आपका पीएमसी नहीं है, वरना तो क्या होता है पीएमसी अपने उसको डेवलपर्स को लेके आते हैं। तो एक माइंड मिथ बस्टर्स था जो हमने भी क्लैरिफाई किया कि भाई हम लोग उनका हेल्प लेंगे बट डीलिंग विल बी डन ओनली बाय द एमसी मेंबर, दैट इज मैनेजिंग कमिटी। सो गोइंग फॉरवर्ड सो नाउ हम आपको ये दिखाएंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम बेस्ड टेंडर है जिसके ऊपर हमने बोला है कि आपको ई टेंडरिंग क्या है। तो हमने एक एल्गोरिथम सेट किया था कि जहाँ पे हमने 70 to 80 पॉइंट्स का टेंडरिंग प्रोसेस को सिंपल कर दिया था कि जहाँ पे आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है और वो बेसिस पे आपको एक स्कोर कार्ड आएगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख सकता है 48.4 ओवरऑल स्कोर कार्ड है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमने जो पॉइंट्स दिए थे वो पॉइंट्स के बेसिस पे आपको ऑनलाइन तुरंत समझ में आता है कि आपका स्कोर कार्ड क्या है, वो हिडन नहीं है, वो स्ट्रेट अवे जैसे ही आप अपना डालते हैं यस नो ऑटोमेटिकली वो स्कोर कार्ड। तो बेसिकली वी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलपर्स आल्सो कि आप अपना स्कोर कार्ड आप देखो, ऐसा नहीं है कि आप हमको जो सबमिट करने वाला हम लोग प्ले करने वाले हैं उसके अंदर, वो आपको भी पता चलेगा कि आपने यस किया है तो स्कोर यस में क्या हो रहा है, नो में क्या हो रहा है और हर एक चीज के लिए वो स्कोर पर तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। तो वो एक मेजर बोन एक डिफरेंशिएटेड था कि जहाँ पे काफी डेवलपर्स ने उसको अप्रिशिएट भी किया, ये एक डिफरेंट था। और कभी-कभी आई थिंक सो ये शीट भरना एक टीडीएस जॉब भी है, तो ये थोड़ा उनको एक एंटरटेनमेंट जैसा भी लगा कि एक्साइटमेंट कुछ नया। आई थिंक सो ये जो फील्ड था उसमें ये पहली बार उन्होंने ये नोटिस किया कि ये होता है। आई थिंक सो पीएमसी शायद करते रही कि नहीं पता नहीं है, पर कभी भी किसी के पास से भी सुना नहीं है कि ये किसी ने किया है। तो दिस इज द फीचर ऑफ एल्गोरिथम के ड्रॉप डाउन सिलेक्शन ऑप्शनल है, वेटेज गिवन टू ईच एंड रो बेस्ड, डेवलपर क्लियरली नोज स्कोर क्या आता है और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स भी है वो भी आपका सिविल स्कोर है। एवरीथिंग वाज आस्क्ड ऑन द टेंडर इटसेल्फ कि आप सिविल स्कोर प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, यस करेंगे तो उसके मार्क्स से, नो करेंगे तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे वो हिसाब से। तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये हम लोग ने पूरा का पूरा शीट बनाया था और इसका जो बैकएंड किया था उसमें हम लोग ने एक डैशबोर्ड बनाया था कि जहाँ पे हमने 15 डेवलपर्स के सिर्फ डिटेल्स डाल दिए और डिटेल्स को सिर्फ रन किया तो डैशबोर्ड हमको पूरा एक एनालिसिस दे देगा कि किस डेवलपर का क्या स्कोर है और कौन से बेसिस पे क्या आता है। सो दिस हेल्प्ड अस इवैल्यूएट जो मेंबर्स थे उनके लिए भी एक इजी वो हो गया कि भाई, और हम लोग के लिए भी ऐसा एमसी अगर हमको कोई मेंबर्स पूछता है आपके कि भाई कैसे गाइड करेंगे आप क्या है, तो ये इजी एनालिसिस था हम लोग के लिए क्योंकि यहाँ पे सबके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सबका स्कोर सेम आने वाला है नो मैटर व्हाट आप ऑन, तो वो इजी होता था। डेमोंस्ट्रेशन, आई जस्ट शो यू सम डेमोंस्ट्रेशन हाउ इट्स हमने कैसे वो अचीव किया जो भी था। ये हम लोग का जो शीट है, सो आई आस्क हेमंत टू जस्ट हैव सम थिंग। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं तो स्कोर 0-0 है, अभी ये डेवलपर का नाम आ गया। अभी the moment he starts filling in it, you'll see the scoreboard ticking up। हर एक पैरामीटर्स डाला है, अगर वो डाल रहे हैं जैसे कि उनका जो ग्रुप का करोस लेटेस्ट है सर्टिफाइड है, अगर वो लेस देन 50 डालते हैं तो 0.1 होता है, अगर उससे भी ज्यादा डालते हैं तो उनका स्कोर कोड वो हिसाब से चेंज होता है। तो वैसे हर एक पॉइंट में हमने उनको
उनको टैब्स दिया है, वो बेसिस पे उनका ओवरऑल स्कोर चेंज होते जाता है। एक चीज ये था इसके अंदर कि अगर वो अपना सिविल स्कोर 500 से नीचे डालते हैं, सिविल स्कोर का बेसिकली 900 तक का लिमिट रहता है, तो एनीथिंग अबव इज काउंटेड टू बी अ गुड सिविल स्कोर। तो वो बेसिस पे हमने उनको सिविल स्कोर के बेसिस पे भी हमने मार्किंग दिया था करके, क्योंकि रीडेवलपमेंट है तो क्रेडिट रेटिंग आई थिंक सो ज्यादा अच्छा होना ही चाहिए, तो ही उसको ज्यादा वेटेज दिया है हमने। और वो हिसाब से हमने जो जो करते गए वो हिसाब से उनको भी आइडिया गया। ओनली थिंग वी डिड नॉट गिव स्कोर्स वाज द ऑफर्स, बिकॉज़ द ऑफर्स यूजुअली डिस्कशन, और हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी ऑफर के बेसिस पे अपना पॉइंट्स बढ़ा दे। ऑफर्स, एरिया ऑफर्स बेसिकली जो आपको परसेंटेज ऑफर्स रहता है कि भाई मैं इतना ज्यादा दूंगा कर, तो उन्होंने वो चीज को हमने स्कोर के साथ कंपेयर नहीं किया था। जो एल्गोरिदम में है वो हमने सेपरेटली उसको डिफरेंशिएट किया था चेकिंग के लिए। तो वो हिसाब से ये आप देखेंगे कि हमको रेंट कितना देंगे, वो कमर्शियल्स को कितना देंगे, हम लोग को कॉर्पस कितना देंगे, वो हर एक चीज इसमें डिफाइन थी जो स्कोर बोर्ड के साथ में आपको दिखेगी। And many more. So this was a classic example कि जहाँ पे आप सोच सकते, समझ सकते, easy होता है मेंबर्स के लिए भी और हम एमसी मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि हमको 216 जन को समझाना था, तो उसके लिए पहले हमको क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम सामने वाले को क्या समझा रहे हैं और कौन से बेसिस पे समझा रहे हैं। तो एक एल्गोरिदम बनाया गया जहाँ पे हर एक डेवलपर को एक ही रेंज से देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम, इसके लिए डिफरेंट है। ये शीट भी उनके साथ शेयर किया गया था और उनसे ही शीट लाके हमने इधर पेस्ट किया और फिर हमने भी डैशबोर्ड भी बनाया था। यू कैन जस्ट शेयर द डैशबोर्ड। एक डैशबोर्ड था कि जहाँ पे पूरा एनालिसिस आ जाता है, यहाँ पे ओवरऑल स्कोर आ जाता है, हर एक डेवलपर का आ जाता है, यहाँ पे डेवलपर 1 है तो उसका एक कंपाइल्ड शीट पूरा बन जाता है। एक पूरा एनालिसिस करने के लिए एक सामने एक पूरा शीट आ गया आपको, जहाँ पे आप पूरा कंपैरिजन कर सकते हो कि ये डेवलपर ने आपको क्या दिया, बी डेवलपर ने क्या दिया, सी डेवलपर ने क्या दिया, उन सबका नेटवर्क कितना है, उन लोग का क्या क्या एक्स्ट्रा दिया है, और वो बेसिस ये शीट आपको शेयर करेंगे ना, तो जिससे आपको और भी क्योंकि ये क्या है ना, इतना बड़ा एक्सेल शीट है ना, So the headings which are three numbers. Yeah, that is okay. Also to add, ये जो भी आप green color देख रहे हो, so those are the top 3 in that particular row. Red is the lowest one. So अगर मेरे को ऑफर भी कंपेयर करना है कि 33 में किसका हाईएस्ट है, 33 11 में किसका हाईएस्ट है, इसका कॉर्पस ज्यादा है, इसका रेंट ज्यादा है, तो ये सारा ग्रीन रेड आपको बता देगा. So that becomes easier as well. Yes, no, we whether they are going to comply with our requirement or not going to comply. So it is going to give you an answer for that. So basically now अभी आपको जो दिख रहा है यहाँ पे जो ग्रीन पे दिख रहा है वो टॉप 3 दिख रहे हैं जिनको हमने ग्रीन मार्क्स दिए, जिसके 48 है, 31 है, 29.9 है. So basically this analysis helped us to select top 3, top 5 or top 5 or top 10, whatever you want. यहाँ पे एक सिंपल कंपैरिजन इजी कर देते हैं. तो ये हमारा एक प्रोसेस था जो आपको एल्गोरिदम बेस्ड जो हमने ई टेंडरिंग किया था वो ये चीज था. सो दिस वाज डन बाय हाईली प्रोफेशनल पीपल्स और एमएन बीइंग एन आईटी गाय, उन्होंने काफी इसमें और सतीश भाई ने काफी इनपुट डाले टेंडर्स में पहले पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए. सॉर्ट आउट मतलब हम लोग ने कम से कम 10 वर्जन बनाए रहेंगे टेंडर के फाइनल करने के बाद. फाइनल करने के पहले मिनिमम 10 वर्जन उसको रन किया, वापस एनालिसिस किया कि इसमें क्या करना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और हर एक चीज को वो हिसाब से डिफाइन किया गया ताकि उसका जो एनालिसिस है वो सिंपल और स्ट्रेट आता है. तो वो बेसिस पे हर एक चीज को काउंट किया गया और डेवलपर को मार्क्स दिए गए थे. और डेवलपर को भी ऐसा है तो उसको खुद को भी पता है कि उसका स्कोर बोर्ड क्या है. थिंग टू बी डन, क्योंकि वो वहां पे हमने इसमें कवर नहीं किया था पूरा का पूरा, क्योंकि वो स्कोर बोर्ड हम लोग ने डिफरेंशिएट क्योंकि उनके बैलेंस शीट्स और सब ट्रैक करने के लिए वो अलग से हमने एनालिसिस किया था. पर ये बेसिक था जहाँ पे हमको एक आइडिया आ जाए कि भाई टॉप 5 टॉप 10 कौन आ सकते हैं करके, पोटेंशियल्स किसका ज्यादा है. डेवलपर को ये नहीं मालूम है बाकी लोग का स्कोर बोर्ड क्या है. वो
उनके तक ही सीमित था। सो डेवलपर खाली ये शीट भर के आपको भेजेंगे। अभी इसमें भी मेड 3 डैशबोर्ड, वन इज ऑल वीडियो डैशबोर्ड जहाँ पे सारा समरी है, समरी ऑफ ऑफर्स। बेसिकली एज अ लेमैन, एज अ मेंबर मेरे को खाली 4-5 चीज जानना है, परसेंटेज कितना, कॉर्पस कितना, रेंट कितना, टू एंड फ्रो कितना, उसके लिए ये डैशबोर्ड था दैट दे नो। एंड व्हाटएवर यू सी हियर कंपनी एसेट टू लोन रेशियो, एक रेशियो था कि अगर उसका टर्नओवर कितना है उसके अगेंस्ट लोन कितना उनका ओपन है अभी। सो इट टेल्स मी कि कितना परसेंट पे वो लोन पे चल रहे हैं, अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू हाईलाइट में किसका सबसे ज्यादा लोन परसेंटेज टर्म्स में कंपेयर टू द नेटवर्क। Third dashboard was summary of all the scores. Now this is clearly going to tell me because सारे parameters में मेरे top 3, top 5 कौन से developers हैं, because the higher the score, the better developer it is from a overall perspective, because finance हो गया, offer हो गया, technical bid हो गया, सारा sum कर गया। तो ये खाली एक guidelines हमारे लिए था कि अगर इसके basis पे हमको किस developer पे ज़्यादा shortlist करना। So ये एक फाइनल जो स्कोर कार्ड दिख रहा है, ये एक हम लोग ने डैशबोर्ड से हमने खोल करके अपने मेंबर्स को दिखाया कि दिस इज व्हाट जेन्युइनिटी इट हैज, एंड मेंबर्स को भी इनवाइट किया कि आप क्रॉस वेरीफाई करो। सो फ्यू मेंबर्स क्रॉस वेरीफाइड आल्सो कि भाई एल्गोरिथम में कोई इशू तो नहीं है, उन्होंने खुद को करके देखा कि हाँ बराबर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो भी है वो मेंबर्स को भी टेस्टिफाई कर लिया कि भाई आप भी चेक करो कि इसमें कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। हमने अपने हिसाब से काफी किया टेस्टिंग, फिर मेंबर्स को भी बोला, तो उन्होंने भी जाके ये चीज को चेक किया कि भाई कोई भी फिगर्स इधर उधर हुआ नहीं। और बेस्ट पार्ट क्या था कि डेवलपर से शीट मांगा था, हमको तो फील करना ही नहीं था, तो डेवलपर का शीट को ही पेश करना था, तो वो हेल्प अस अ लॉट। And to add to this, this entire sheet is locked and protected. Only open field is column D, where they have to fill in the value and comments. तो जनरली क्या होता है, डेवलपर्स की टेंडेंसी होता है कि जब उनको भरने बोलेंगे कुछ ना कुछ चेंज करके दे देंगे तो कंपेयर इजी नहीं होता है। हमने सारा लॉक करके दे दिया, सो दैट व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट इज एप्पल टू एप्पल, नॉट अगेंस्ट एप्पल अगेंस्ट ग्रेप्स। तो वो एक कंपैरिजन हमारे लिए बहुत इजी हो गया था फ्रॉम अ मेंबर्स पर्सपेक्टिव। जैसे आगे हेमंत ने बताया था रिलेटेड टू गैंट चार्ट। गैंट चार्ट बेसिकली ये गैंट चार्ट है जहाँ पे हमने पूरा अपना एक